Hello, my dear students. Good morning. Students, as you know, we started reading the chapter number first, The Portrait of a Lady, yesterday, and I also sent a video on your WhatsApp group so that you can be able to know about some important facts, okay, regarding this the chapter. Only the first passage was was explained by me in the first part of my video about this chapter number first. Okay, so now the second passage as you can see here starts with the word she had always been short and fat and slightly bent. She stands for here the author's grandmother, okay, whose name is not mentioned here in the story. She had always been short and fat and slightly bent. Since the author had seen his grandmother very closely right from the first day of his stay in his village with his grandmother, he had seen her in the same physical appearance, in the same physique. That's why it had become so much difficult for him to believe it that she had once been young, pretty, and had even had a husband. These all facts were attended by us in the first passage. But through this statement, the author Khushwant Singh also wants to tell us that, as per his observation, his grandmother had always been a lady of short height, had always been a lady of short height. She was fat and flabby woman, and a little bit was also she was also bent. I mean to say her body had also bent. Her body had also bent down. She had a little stoop in her body. Okay. As per his observation, he makes it clear that his grandmother had always been the lady of a short height with surplus fat on her body, and her body had also a little bit, okay, bent down. Slightly stands for here, not so much but marginally, or we may say more or less. Her face was a cross of wrinkles. But the word wrinkles stands for here lines, intersecting lines. Her face was a cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Okay, and now I am reading the line number 2 in this passage number, line number 2 in this passage number 2. Okay, her face was a cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Khushwant Singh also noticed one thing very visibly, very clearly, that the face of his old grandmother was completely packed with so many lines that were running from all sides, that were intersecting each other coming from different directions. It means in Hindi कि उसकी अपनी दादी का जो चेहरा जो था ना, उसकी अपनी दादी का चेहरा जो था वह काफ़ी ज़्यादा झुर्रियों से भरा हुआ था. हर फेस वाज ए क्रॉस ऑफ रिंकल्स running from everywhere to everywhere. Through this statement, it is pointed out that the face of that elderly woman, I mean to say, the face of the author's grandmother was completely packed with was completely packed with a number of lines running from different directions. Okay, and we may say her face did not look so beautiful because of those all wrinkles, lines. No, we were certain she had always been as we had known her. No, the word no stands for here his disapproval. He was not in condition to give his approval that his grandmother had once been young and pretty. Since right from the very first day he started
living with his grandmother, he had always seen her in the same physique, in the extremely old age, with a slight bend in her body and excess or surplus fat also. That's why it became so much impossible for the author that he could accept the fact that she had always been a young and pretty. No, we were certain we stands for the children of the author's family. All the children of the author's family were not ready to accept the fact that their grandmother had always been a young and pretty. No, they had they had confirmed it on their part that the lady had always been old and excessively fat, in a physique, as we had known her. No, we were certain she had always been as we had known her. Okay, they were all the children of the author's family were not ready to accept that the hard fact. Whatever the people of the village used to tell them, but they were ready to accept only the one fact that the old lady, their grandmother, had always been very old, with so many wrinkles on her face, with a slight bend, with a little bit more or less bend in her body, and nothing else, and had stayed at the same age for 20 years. All the children of the author's family, all the children of Khuswant Singh's family were of the opinion that their grandmother had stayed at the same age for the last 20 years. There had been no change in her physical symptoms for the last 20 years. So we can say that the author and his cousins had seen her for the last 20 years. Since when he started living with his grandmother, he was a mere baby. So when he had attained the age of 20, he had also found no change in her physical appearance. So it became so much difficult for him to accept the hard fact that she had once been young and pretty. She could never have been pretty. The word pretty stands for here extremely beautiful, to a great extent. Person who looks extremely beautiful, in her physical appearance and complexion. She could have never been pretty. This is the opinion of Khuswant Singh. So according to Khuswant Singh, his grandmother had never been extremely beautiful lady in her life, but she was always beautiful. But she was always beautiful means she always looked like a beautiful lady. She was not an ugly lady. Her face did not look so ugly, so disfigured because of the wrinkles. No, the author was not ready to accept the fact that his grandmother was not beautiful. He says that his grandmother was really so much beautiful, both by her in her physical appearance as well as in her inner spirits of her heart. So we can say that she was always beautiful means she was always beautiful, pure, and very clean slated person. She hobbled about the house. The word hobbled stands for beta. This is the line number 4, word number 2 at this page number 4, as you can see here. She hobbled about the house. The word hobbled stands for walked with difficulty, walked with a limp, 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 some physical problem, due to some physical problem, जिसको लंगड़ाना कहते हैं. She hobbled about the house. Limp mean लंगड़ाना होता. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop. Stoop stands for a bend, a slight bend in the body. Whenever the author's grandmother walked here and there in her house, in her village house, in spotless
In spotless white stands for here. She always put on a white sari, okay, without any spot. Spotless means very clean, fully cleaned and washed white colored sari. Secondly, the word can also be referred, can also refer here the, okay, the extreme beauty of the house also. She hobbled about the house in spotless white, but in this sense, the word spotless white stands for here, beta, her fully washed, without any spot, having no spot, so gracious sari, white spotless sari. She wearing her white spotless sari. Khushwant Singh's grandmother, okay, always walked here and there in her village house with resting one hand on her waist to balance her stoop, to balance her body so that she could maintain her balance, and the other telling the beads of her rosary. She used to keep a garland, she used to keep a rosary, okay, in which some beads were also engaged. So she used to keep the rosary, जिसको हिंदी में माला बोलते हैं. So she used to keep her rosary and also kept herself quite busy telling the beads of that rosary every moment, every time. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on the waist to balance her stoop. Means in हिंदी आपको मैं समझा देता हूँ. वो कहता है कि जहाँ तक कि मैंने अपनी दादी माँ को देखा, मेरी दादी माँ सफ़ेद, बगैर किसी दाग धब्बे के सफ़ेद साड़ी पहन करके हमारे अपने गांव के घर के अंदर, मकान के अंदर, अपना एक हाथ अपनी कमर पर, अपने झुके हुए शरीर का थोड़ा संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक हाथ अपनी कमर पर पीछे टिका लेती थी और दूसरे हाथ से अपनी माला के मणियों को जपती हुई, मणियों को आगे टहलाती हुई, मणियों को आगे की तरफ खिसकाती हुई. टेलिंग का मतलब बताना नहीं होता है. टेलिंग मीन्स मणियों को गिनना, काउंटिंग, और वैसे भी आगे की तरफ घुमाना होता है, रोलिंग, ओके. अपने उस माला के मणियों को घुमाते हुए, और वह पूरे दिन भर जब भी कभी मौका मिलता है तभी हमारे अपने गांव के उस घर के अंदर इधर उधर थोड़े से मुश्किल के साथ में, विद ए लिटल डिफ़िकल्टी, जैसे कि मानो उसके शरीर में कुछ थोड़ी सी चलने में तकलीफ होती हो वृद्धावस्था की वजह से, तो इस प्रकार से वो अपने आप को टहलाती रहती थी इधर उधर, हल्के से लचके के साथ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हल्की सी थोड़ा सा झटका से ले करके वो अपने आप को घर के अंदर इस प्रकार से, जैसे कि कोई बुजुर्ग महिला होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वह अपने एक पीछे कमर के ऊपर अपना एक हाथ टिका करके और एक हाथ बैत में लेकर के, कुछ लोग एक हाथ में अपना बैत रख लेते हैं, स्टिक ले लेते हैं, और उसके साथ में फिर वो इस प्रकार से इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं. ठीक वैसे ही हर सिल्वर लॉक्स स्टैंड्स फॉर हेयर, हर सिल्वर कलर्ड हेयर, ओके. But here the word locks stands for hair, not only the hair but, okay, ramparts of hair, मतलब कि बालों के गुच्छे जिसको बोला जाता है, इधर उधर बिखरे हुए गुच्छे. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. Puckered stands for a wrinkled face again. The author also noticed that the silver colored ramparts of her hair, locks means the not fully combed, scattered hair, okay, which looked so untidily, which looked so untidy. Untidy stands for hair not so beautiful. So her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face. The silver colored hair of his grandmother, of the author's grandmother, also scattered here and there, so dirtily, untidily, okay, over her pale and wrinkled face. उसके पीले उतरे हुए झुर्रियों से भरे हुए चेहरे के ऊपर वो कहता है कि मेरी दादी माँ के
पीला दिखाई देने वाला, रक्तहीन, जिसमें ब्लडलेस हो। मेरे अपनी दादी माँ की उस पीले से और झुर्रियों से भरे हुए चेहरे के ऊपर बड़े बेकार तरीके से मेरी दादी माँ के बालों के चांदी की भांति चमकते हुए बालों के गुच्छे इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन inaudible prayer. And secondly, he also noticed that the lips of his grandmother, okay, remained always busy in singing the prayer in an inaudible voice. Inaudible means the voice that cannot be heard, that cannot be listened to very carefully. सो इन ए वेरी लो वॉइस, वह धीरे धीरे बिल्कुल ही हल्की आवाज़ में अपनी गुरबानी को, अपनी प्रार्थना को हमेशा जपती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल। अगेन द ऑथर क्लेम्स इट दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज रियली सो मच ब्यूटीफुल बाई हार्ट एंड बाई हर फिजिकल अपीयरेंस। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। अगेन ही हैज़ कंपेयर्ड हिज ग्रैंड मदर विद द लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप. So he, through this statement, using the poetic device simile, he wants to make it clear that his grandmother looked so silent and reserved and fully absorbed in peace and contentment as a landscape looks in the winter days, due to the covering of or due to the heavy expanse of the pure white peace and tranquility based snowfall. Pure white snowfall. Serenity stands for peace and contentment. An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. It has already been explained by the author here. वो कहता है कि मेरी अपनी दादी माँ जैसे कि सर्दियों के दिनों में कोई एक भूदृश्य होता है, और जिस भूदृश्य के ऊपर, यानी किसी पर्वत के ऊपर, किसी पहाड़ी के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर, किसी नदी नाले के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ का गिर जाती है, हिमपात हो जाता है, और वह बर्फ़ देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बड़े ही शांत पीले ढंग से और बड़े संतुष्टि के भाव के साथ में वो बर्फ़ वहाँ पर बिखरी हुई पड़ी है। ठीक वैसे वो कहता है कि मेरी अपनी दादी माँ भी इस प्रकार से बड़े शांत प्रिय ढंग से हमारे घर में रहा करती थी। While comparing his grandmother with the winter landscape, the author hints us that it was such a lady who never spoke so excessively, and his grandmother always kept herself in extreme silence, and she always enjoyed peace and contentment. She was fully satisfied to whatsoever she had in her possession. She never demanded for so many other materialistic things. That's why she was totally satisfied to her life conditions, and she never complained of anything. She looked just like a winter landscape in her in her sentimental feelings, in her emotions, and by her heart also. My grandmother and I were good friends. Beta, the next page number 4, passage number 2. My grandmother and I were good friends. Through this statement, I think there is no need to give more explanation. You have understood it. Through this statement, the author tells us that he and his grandmother, they both were fast friends. There was fast friendship between the author and his grandmother. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. The word constantly means always. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. When the author's parents had left their village and they had gone to settle themselves or to start their business in some city, the author was left, or they had left the author in the company of his grandmother in their village. And right from that day onwards, the author used to live with his grandmother every time. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. It was the duty, it has become the regular duty of the older lady that she used to stands for here, the habit of a person. She used to wake me up in the morning and get me ready for school.
It was the author's grandmother who always used to follow her duty, and she used to wake the author up in the morning hours and get him ready for school also. She said her morning prayer in a monotonous sing song. Monotonous stands for here in an inaudible, okay, in an inaudible voice. Inaudible voice, that was not clear what was being spoken by her. She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed. When the author's grandmother used to give him a good bath, okay, used to take him into the bathroom, she also started singing her Guru Vani. She also started singing her morning prayer deliberately in the same inaudible voice, thinking that her grandson could also learn it by heart, and he could also cultivate a habit of singing the same prayer in his voice, and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. It has already been cleared. Whenever the author was dressed up by his grandmother, she also said her morning prayers in the presence of him, so that he could also learn it by heart, and he could also start singing the same Guru Bani like his grandmother. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen. The word adorn, not earthen, but adorn. Adorn stands for here, बेटे बेक्ड क्ले, चिकनी मिट्टी जो होती है, पकाई हुई चिकनी मिट्टी. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed. After performing these performing these 3 to 4 most important duties that the old woman used to both are the synonyms. Used to fetch mean bring his wooden slate, जिसको हिंदी में तख्ती कहते हैं, which she had already washed, that the wooden slate had been washed by her previously, and she had also plastered with yellow chalk. Yellow chalk stands for मुल्तानी, जिसको कहते हैं मुल्तानी. तो दादी माँ उसके अपने उस काठ की तख्ती को, जिस तख्ती को वह अच्छे से ढंग से साफ़ कर दिया करती थी, उसके ऊपर मुल्तानी का लेप कर दिया करती थी, वह तख्ती उसके पास में लेकर के आती थी. ए टाइनी अदौन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई कोई एक दवात, शाही की दवात, एंड ए रेड पेन, एक लाल पेन, एंड टाई दैम ऑल इन ए बंडल. देन सी फास्टेड दोज ऑल द थिंग्स इन ए बंडल. फिर उसके बाद एक बंडल में गट्ठर में उन सभी को बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और उसके बाद वो कहते कि मेरे को सब चीज़ें सौंप दिया करती थी. देखो मैं इस पैसेज को थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट करके ज़रूर बताऊंगा. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. लेखक कहता है कि मैं और मेरी दादी माँ दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. जब मेरे माता पिता शहर में रहने के लिए गए, तब उन्होंने मुझे मेरे अपनी दादी की माँ के पास छोड़ दिया गांव में. एंड वी वर कंस्टेंटली टुगेदर, और तब से ही हम दोनों एक साथ रहने लग गए थे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. मैं तीसरी लाइन की थर्ड लाइन पढ़ने लग रहा हूँ. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. मेरी दादी माँ सुबह सवेरे के वक्त मुझे अपनी नींद से उठा दिया करती थी, जगा दिया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और विद्यालय जाने के लिए मुझे तैयार भी कर दिया करती थी. ये मेरी अपनी दादी माँ का एक नित्य रोज़, हर रोज़ का कार्य हो गया था. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. जब मेरी दादी माँ मुझे इस प्रकार से, वाइल सी बेस्ड एंड ड्रेस्ड मी, वाइल स्टैंड्स फॉर वैन. जब दादी माँ मुझे स्नान कराती थी, और स्नान कराने के बाद जब मुझे कपड़े पहनाती थी, तो उस वक्त दादी माँ जानबूझ करके, मैंने डेलिबरेटली वर्ड अपने एक्सप्लेनेशन में यूज किया, जानबूझ करके दादी माँ मेरे सामने अपनी वही गुरुबानी, वही सुबह सवेरे की प्रार्थना जो पढ़ा करती थी हर रोज़, वह मेरे सामने गुनगुनाती रहती थी, पढ़ती रहती थी. इन द होप, इस उम्मीद के साथ में, इन द होप मीन्स होपिंग दैट आई वुड लिसन, इस उम्मीद के साथ में कि मेरा पोता मेरा पोता मीन्स खुशवंत सिंह को लेकर कह रही है कि मेरा पोता मेरी अपनी इस गुरबानी को सुने, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और इसको कंठस्थ जुबानी याद कर ले. इस उम्मीद के साथ में कि मैं उसकी अपनी गुरबानी को सुनूं और उसको मैं कंठस्थ जुबानी याद कर लूँ. देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, क्योंकि वो मुझे धार्मिक बनाना चाहती थी और धर्म के रास्ते पर ले जाना चाहती थी. एंड सी वुड स्टैंड फॉर अगेन the habit of a person in the past. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk,
फिर उसके बाद में मेरी दादी माँ जब मुझे स्कूल के लिए अपनी पोशाक, अपनी वर्दी पहना देती थी, कपड़े इत्यादि पहना देती थी, उसके बाद मेरी दादी माँ मेरी उस तख्ती को, काठ की तख्ती को मेरे पास लेकर के आया करती थी। जो काठ की तख्ती वह अच्छे ढंग से साफ पहले करके रख दिया करती थी और उसके ऊपर एक मुल्तानी का लेप कर दिया करती थी। टाइनी अर्दन इंक पॉट, उसके बाद वो छोटी सी एक मिट्टी की बनी हुई दवात, चाय की दवात, पकी हुई मिट्टी जैसे अपना मटका होता है उस प्रकार की कोई दवात होती थी। वो दवात पुराने ज़माने में, और बेक्ड क्ले जो होती थी उसके साथ में पकाई हुई मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी, उसकी दवात बना करके वो लोग ले जाया करते थे स्कूल में। और उसके बाद कहते हैं कि वो एंड ए रेड पेन, उसके बाद में फिर वो एक लाल रंग का पेन जो मैं अपने स्कूल में इस्तेमाल किया करता, वो पेन भी एक शाही की दवात, छोटी सी शाही की दवात, टाइनी मीन स्मॉल के लिए आता है। टाई दैम ऑल इन ए बंडल, उन सभी चीज़ों को वही गट्ठड़ में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और वो मुझे सौंप दिया करती थी, बेटा आपको स्कूल में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, आप लेकर के जाइए। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल, स्टेल स्टैंड पर होता है अनफ्रेश चपाती with a little butter and sugar spread on it, we went to school. It was the last task. What was the last task of grandmother, of the author's grandmother? She used to feed him with the stale, unfresh, thick chapati, okay, spreading butter and sugar on it. मक्खन और चीनी उस रात के समय की पकाई हुई उस बासी रोटी के ऊपर लगा करके, और वो कहती है कि मेरी दादी माँ मुझे इस प्रकार से नाश्ता करवा दिया करती थी स्कूल जाने से पहले। ये मेरा अपना नाश्ते का एक व्यंजन होता था, खाने का मेरा अपना जो भी खाने में जो चीज़ मुझे मिला करती थी वो बासी रोटी होती थी, उसके ऊपर फिर मक्खन और चीनी लगा करके वो मुझे कह दिया करती थी, बेटा खा लो इसको। वी वेंट टू स्कूल, उसके बाद हम दोनों के दोनों स्कूल चले जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, and she also used to carry a number of stale, unfresh, the chapatis, the bread which she had cooked the previous night, जो रात पीछे बीती हुई रात के दौरान में जो उसने अपनी रोटियां बनाई हुई थी, वो बची हुई रोटियां थी, वो सारी बासी रोटियां फिर वो अपने साथ में ले जाती थी। बट वाई? इन ऑर्डर टू फीड द स्ट्रे डॉग्स, द विलेज डॉग्स, गाँव के वो आवारा कुत्ते जो होते थे उन सभी कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। बिकॉज on the way to school, she used to meet a number of stray dogs in the village and she used to feed them the stale chapatis. गांव के जो कुत्ते उसको मिला करते थे स्कूल के अपने रास्ते में, क्योंकि वो स्कूल के रास्ते में उसको जब स्कूल में छोड़ने के लिए अपने पोते को यानी खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ने में ले जाया करती थी। तो आप जानते हो कि गांव में बहुत सारे इस प्रकार के कुत्ते तो अक्सर जो है ना बहुत ज़्यादा मिल ही जाते हैं। तो गांव के उन सभी कुत्तों को और वो बासी रोटियां जो है ना खिलाने के लिए अपने साथ में काफ़ी सारी रोटियां साथ में लेकर के भी चली जाया करती थी। ओके, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी. It was the custom, it had become the custom and tradition of the old lady that she used to go with the author, with the author to his school. She used to take the author to his school in her company, because the school was attached to the temple. There were two reasons, okay, there were two reasons of doing that the task, of performing that the task. Since the author's grandmother used to go with the author to his school, because she wanted to spend her time there sitting in the temple also, because both the temple and the school were attached to each other. वो कहता है कि मेरी दादी माँ हमेशा मुझे अपने साथ में अपने विद्यालय मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ विद्यालय जाया करती थी, क्योंकि हमारा विद्यालय मंदिर के साथ में लगता हुआ था। मंदिर और विद्यालय दोनों को पार्टीशन किया हुआ था, एक साथ में ही दोनों बिल्डिंग बनी हुई थी। द प्रिस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. The priest, in those days, in the earlier times, only the priest used to teach the children in the temples, and that some people used to offer their prayers in the temple before gods and goddesses, and the children used to get education in the school. पहले तो मंदिरों इत्यादियों में, गुरुद्वारों में इस प्रकार से पढ़ाई हुआ करती थी, इसलिए कहता है द प्रिस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. वहाँ उस विद्यालय में, हमारे अपने विद्यालय में जो पुजारी जो हमें पढ़ाने के लिए लगाया हुआ था, हम सभी बच्चों को वहाँ में वर्णमाला पढ़ाता था। सुबह सवेरे के वक्त की जो प्रार्थना होती थी, भगवान के नाम जो हम लिया करते थे, वो सब हमें सिखाता था। While the children sat in rows on either side means on both the sides of the veranda, singing the alphabet. At the time when all the children had taken their position on both the sides in the veranda, in the corridor, and they had started singing the alphabet or the prayer in a chorus. Chorus stands for in unison, beta, in a single one voice,
My grandmother sat inside reading the scriptures. The word scripture stands for your holy writings, HOLY, holy writings, religious thoughts जिसको कहते हैं, word of God. While the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet, कहता है कि जब हम सभी बच्चे अपनी वर्णमाला को गाते हुए बरामदे के दोनों तरफ के हिस्से में, दोनों तरफ के बगल के हिस्से में हम जब पंक्तियों में अपनी अपनी पंक्तियों में जब सभी बच्चे बैठ जाते थे और हम जब वर्णमाला पुजारी के बताने के मुताबिक गाने के मुताबिक हम सब गाते रहते थे, और द प्रेयर इन ए कोरस, और हम एक साथ एक समूह में जब हम अपनी प्रार्थना पढ़ते रहते थे, उसी वक्त माई ग्रैंडफादर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी माँ उस मंदिर के हिस्से में, मंदिर जहाँ बना हुआ था मंदिर के अंदर बैठ करके धार्मिक ग्रंथ जो लिखे हुए थे, उन धार्मिक ग्रंथों के बारे में लिखी हुई उन सभी शब्दों को पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों के दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर। थ्रू दिस स्टेटमेंट द ऑथर टेल्स अस दैट when the school was over, so his grandmother and they both started coming back to home together. This time the village dogs would meet us at the temple door. While coming back to home, they used to meet the village dogs standing just at the temple gate. They followed us to our home growling. Growling stands for your bete, showing the teeth at each other. Okay, growling stands for making a harsh voice, angry utterance, UTTERANC, एंग्री अटरेंस का मतलब तो गुस्से से गुर्राना, कुत्ते अक्सर गुर्राते हैं। तो कहता है कि अब हम वापस जब अपने वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों के दोनों अपना काम पूरा कर चुके होते थे, उधर से हमारे अपने विद्यालय छुट्टी हो जाती थी, तो दादी माँ उस वक्त तक अपनी सारी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेती थी, जितने भी धार्मिक जो हस्तलिपियाँ लिखी होती थी, धार्मिक शब्द जो लिखे हुए होते थे, धर्म के नाम पर लिखे हुए जो उपदेशात्मक शब्द होते थे, उन सभी को जब पढ़ लेती थी दादी माँ भी, तो हम दोनों के दोनों अपना काम जब पूरा कर चुके होते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम दोनों के दोनों एक साथ अपने घर की तरफ वापस चलना शुरू करते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस बार वापस आते समय हमें हमारे गाँव के जो कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे के ऊपर बिल्कुल खड़े मिलते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो चपाती जो बासी रोटियां हम उन कुत्तों के सामने जब वापस आते समय फेंका करते थे, उनको खिलाने के लिए उनके सामने रखा करते थे, तो अपना अपना हिस्सा पाने के लिए वे सभी कुत्ते एक दूसरे की तरफ गुर्राते हुए और झगड़ा करते हुए हमारे घर तक वो पीछा करते थे, हमारे घर तक वो आते थे। बेटा, आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ टुडे इन दिस माई सेकेंड पार्ट. I think we have completed 3 to 4 passages, and these 3 to 4 passages are to be revised by you, and take the explanation as well as the translation whatever I have given here very sincerely and very seriously, so that you can be able to know about the facts concerning to this chapter. Thank you, beta.